Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll see 45 minutes session. We'll take a 45 minute session of CNS CNS stimulants drug. We'll take a CNS stimulant drug in a 45 minutes, and tomorrow we'll take a antipsychotic drugs. Actually, I was willing to take antipsychotics too, but it was late, so tomorrow we'll see the antipsychotics. Today we'll see the CNS stimulants drug. Again from pharmacology. Today we'll see the CNS stimulant drugs. Tomorrow we'll see the antipsychotics, antidepressants and mood stabilizers. Today we'll see only CNS stimulants. So tomorrow we'll see the antipsychotics. तो एंटीसाइकोटिक्स लेना था मुझे आज, सीएनएस स्टिमुलेंट्स प्लस एंटीसाइकोटिक्स, बट थोड़ा सा लेट हो चुका है, सो सीएनएस स्टिमुलेंट्स आज फिनिश कर देंगे एंड कल देखेंगे अपन एंटीसाइकोटिक्स. इन द फार्माकोलॉजी we have seen general pharmacology, we have seen drug acting on a blood, that is coagulant, anticoagulant, thrombolytics. We have seen the anti-diabetic drugs. We have also seen hypolipidemic drugs. We have also seen drug acting on CNS, that is a we have also seen the general anesthetic, sedative, hypnotics, anti-convulsant drugs, right? Now we'll see the CNS stimulants drug. So what do you mean by first CNS stimulants? CNS stimulants मतलब क्या है? CNS stimulants, they are also known as analeptics. Remember, CNS stimulants, they are also known as analeptics. CNS stimulants are also known as analeptics. Very, very important. Analeptics are also known as respiratory stimulants. CNS stimulants or respiratory stimulants or analeptics. All these terms are the synonymous to each other. CNS stimulants or analeptic or respiratory stimulant. So CNS stimulant जो drug होते हैं, they are less useful as a therapeutic purpose, as a pharmacological purpose. They are less useful than the CNS depressant drugs. क्योंकि CNS depressant drugs, they are useful as an anti-anxiety drug, sedative drugs,
hypnotic drugs, right? Then anticonvulsant drugs, then general anesthetic drugs. So CNS depressants, they are having more usefulness as compared to CNS stimulants. CNS stimulants are not therapeutically as useful as CNS depressants. Remember, CNS stimulants are also known as analeptics or respiratory stimulants. What do you mean by analeptics? They are known as a respiratory stimulant or CNS stimulants. Analeptic is a term that indicate the picking up those who have been cast down. जो सोया हुआ है उसको, है ना, जो डल होके बैठा है उसको थोड़ा अलर्ट करने, है ना. एनालिप्टिक मीन्स व्हाट? पिकिंग अप दोज हु हैव बीन कास्ट डाउन. मतलब क्या? अगर कोई ऐसा मतलब मुर्जा सा बैठा है कोई, उसमें एक्टिवनेस ही नहीं है, उसमें इंथुजियाज्म नहीं है, उसमें कुछ करने का मतलब होप ही नहीं है. सपोज कोई ऐसा शांत बैठा है, ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं है, तो टू पिक अप, टू raise up who have been cast down, known as analeptics or CNS stimulants. So CNS stimulants, they have less therapeutic usefulness as compared to CNS depressant drugs. And remember, excessive stimulation to the CNS, it is always followed by depression. Excessive stimulation to the CNS is always followed by डिप्रेशन. आप देखो, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट भी होते कि वो सिगरेट स्मोकिंग करते टू बिकम अलर्ट, सो दे आर यूजिंग निकोटीन, बट सून आफ्टर सीएनएस स्टिमुलेशन देयर इज अ डबल सीएनएस डिप्रेशन. जितना आप सीएनएस को स्टिमुलेट करेंगे उसके डबल उसका क्या रहेगा? एडवर्स इफेक्ट, सीएनएस डिप्रेशन. सो एक्सेसिव स्टिमुलेशन टू द सीएनएस is always followed by depression. Remember this line. And these CNS stimulants or analeptics or respiratory stimulants, they are used to stimulate the CNS, and most of them are stimulate respiratory center. They are useful in the respiratory suppression. जहाँ पे respiration नहीं हो रहा है उस टाइम पे वो CNS को स्टिमुलेट करके, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके उनका इफेक्ट दिखाते हैं. एंड ऑल सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग they can cause convulsions. All CNS stimulant drug, they can cause epilepsy. All they can cause seizures. So CNS stimulant drugs, if used in the higher dose, they can induce you epilepsy. So CNS stimulant क्या होता है? They will increase the activity of your brain. They will increase the alertness. They will increase the interest in your surrounding. They will increase the muscular activity. They will increase the respiratory activity. So they are known as a CNS stimulant or drugs which increases your activity of cerebral cortex is known as a CNS stimulant. Okay. They are also known as a analeptics, CNS stimulants or analeptics. Now classification of CNS stimulant. They are classified into different types. Classification देखो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. Classification of CNS stimulants. CNS stimulants are classified depending upon the action, whether they are directly stimulating the CNS or whether they are a reflex stimulant. So directly acting on a CNS, मतलब they are a direct stimulant. So direct stimulant to CNS, and some are the reflex stimulant. Reflex stimulant मतलब directly नहीं करेंगे stimulant, reflex से stimulate करेंगे, है ना, by irritating the CNS. So directly CNS stimulant drug, for example, उसमें भी पर्टिकुलर एरिया को अगर स्टिमुलेट करता है, सो बेस्ड अपॉन दैट डायरेक्टली स्टिमुलेंट ड्रग, फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द कॉर्टिकल स्टिमुलेंट, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं,
उनको बोलेंगे अपन कॉर्टिकल cortical stimulant means they will stimulate the cortex of cerebrum. Cortical stimulant example is nothing but the xanthine alkaloids. Xanthine alkaloids उसमें आता है आपका कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन. So caffeine, theophylline, theobromine, all they are known as a xanthine alkaloids obtained from है ना टी और कॉफी, टी और कॉफी प्लांट. Cortical stimulant, xanthine alkaloids, then amphetamine is there, then methyl amphetamine is there, then methyl phenidate is there, methyl phenidate and piperidrol. Remember the examples question इसके ऊपर आता है. what are the examples of cortical stimulant, what are the medullary stimulant, what are the spinal stimulant. So remember xanthine alkaloids like caffeine, theophylline, theobromine, they are known as a cortical stimulant. Amphetamine, methylamphetamine and methyl phenidate, piperidrol, these are the cortical stimulant. Second class आता है इसमें, second class that is known as a medullary stimulant. Second class medullary stimulant. So they will stimulate the medulla oblongata. So that's why known as a medullary stimulant. So example is a picrotoxin, then pentylene tetrazole, nicotinamide, PTZ or then nicotinamide, aminophenol, aminophenazole, then next one is a camphor and carbon dioxide. So picrotoxin, pentylene tetrazole, it is also known as a PTZ in short, PTZ, pentylene tetrazole को बोलते हैं अपन PTZ, PTZ बोलते हैं pentylene tetrazole. So this is a drug used in the induction of convulsion. It is a compound, it is a chemical used to induce the convulsion epilepsy. It is a compound which is used to induce the epilepsy in the experimental animals. तो अगर आपको एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी करना है, प्रोजेक्ट करना है, या फिर इफ यू वांट टू चेक द एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी ऑफ सम सिंथेसाइज्ड ड्रग और सम हर्बल सम एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड फाइटोकेमिकल्स, अगर आपको एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी करना है तो उसके लिए आपको मॉडल्स लगते हैं, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लगता है. सो इन दैट केस देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, लाइक जैसे होता है आपका इलेक्ट्रोशॉक इंड्यूस्ड कन्वर्जन, ठीक है. दूसरा होता है आपका केमिकल इंड्यूस्ड कन्वर्जन. तो pentylene tetrazole PTZ is used to induce the convulsions known as chemically induced convulsion in the mice. This picrotoxin is also used, this nicotinamide is also used. तीनों भी ड्रग जो है they are no more used in the humans. Picrotoxin, nicotinamide, pentylene tetrazole, they are only used to induce the epilepsy seizures in the experimental mice and rats. Then aminophenazole, camphor, carbon dioxide, they are also known as a medullary stimulant. They will stimulate the medulla oblongata, and that's why they are known as a medullary stimulant. Third आता है spinal stimulant. Third one is a spinal stimulant. Spinal stimulant example is nothing but the strychnine. Strychnine कहाँ से आता है ये? Strychnine is a alkaloid obtained from Nux vomica. It is a alkaloid obtained from Nux vomica. Strychnine, brucine. They are known as a spinal stimulant. देखो CNS stimulant are classified into two major class: drug directly stimulating the CNS and drug which are reflex stimulant. So drug directly acting on drug directly stimulating the CNS में आता है drug directly stimulate the CNS. In that first class है cortical stimulant, second है medullary stimulant, and third one is a spinal stimulant. And second major class है आपका reflex stimulant. Reflex stimulant, so lobeline, ammonia, veratrum and nicotine.
दे आर नोन एज अ रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट। तो याद रखना है आपको रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट क्या होता है ना। स्पाइनल स्टिमुलेंट का एग्जांपल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। स्टिचनिन इज अ स्पाइनल स्टिमुलेंट। xanthine alkaloid, amphetamine, methylamphetamine, then methylphenidate, piperidrol, they are the cortical stimulant. Okay, CNS stimulant drug, they are not having therapeutic usefulness as compared to CNS depressant. CNS depressant drug जो होते हैं उसका therapeutic usefulness ज़्यादा है, उसका यूज ज़्यादा है as compared to CNS stimulant, right? Remember, CNS stimulants are also known as analeptic or respiratory stimulant. Okay, respiratory stimulant, because they can stimulate CNS and mostly respiratory center. They can induce the convulsions. These are known as the CNS stimulants. ठीक है। Now first is nothing but the xanthine alkaloids. Xanthine alkaloids. In that क्या है आपका, caffeine है, theophylline है, theobromine है। caffeine, theophylline, theobromine, they are known as xanthine alkaloids. Now xanthine alkaloids क्यों बोलते हैं इनको, because these caffeine, theophylline, theobromine, they will have a benzene ring in their structure and they will have a yellow color. That's why they are known as xanthine. There is a one test, आपको एक अमीनो एसिड में एक टेस्ट आता है xanthoprotic test. xanthoprotic test मतलब क्या है, those amino acids which are having benzene ring, मतलब aromatic amino acids, they will give you positive xanthoprotic test. ठीक है। तो xanthine is a Greek word. xanthine क्या है, Greek word. xanthine means yellow colored, है ना। तो naturally obtained alkaloids from Coffea arabica, Thea sinensis and Theobroma coca. ये प्लांट के नाम है ना। Coffea arabica, Thea sinensis मतलब टी आपका, and Theobroma coca. These are the natural alkaloids obtained from coffee, tea and Theobroma plant, right? Now xanthose मतलब क्या, xanthose is the term because of the alkaloid will leave yellow color residue upon the treatment of nitric acid, उसको ही अपन xanthose बोलते हैं। It will leave when these alkaloids are treated with the nitric acid, they will give you yellow color residue, yellow color residue मिलेगा आपको। That's why they are known as a xanthine. The word xanthine is coming from xanthose word, which is a representative for yellow color residue. Now how they will act, mechanism of action. Mechanism of action of these alkaloids, mechanism of action of these CNS stimulant. First, they will act as a they inhibit this enzyme phosphodiesterase. They inhibit this enzyme phosphodiesterase. They inhibit this enzyme phosphodiesterase. तो phosphodiesterase का काम क्या होता है, it will break down the ATP into cyclic AMP, and it will break down the cyclic AMP. तो phosphodiesterase का काम होता है to break down the cyclic AMP and will convert cyclic AMP into 5-cyclic AMP. So increases the conversion of cyclic AMP to the 5-AMP. Phosphodiesterase inhibitor. So there are around 5 type of phosphodiesterase. यहाँ पे कितने phosphodiesterase होते हैं बॉडी में? There are around 5 different phosphodiesterase enzyme. There are around 5 phosphodiesterase enzyme. There are around 5 phosphodiesterase enzyme. है ना, phosphodiesterase 1 2 3 4 5. So PD है ना, PDE है ना, उसको बोलते हैं PDE, phosphodiesterase 1 2 3 4 5. So their locations are different. जैसे phosphodiesterase 1 2 है ना ब्रेन में होता है, phosphodiesterase 5 जो होता है it is present in the penile muscle. So inhibition of phosphodiesterase 5 leads to more erection. So आपको आपने ड्रग सुना होगा Viagra, sildenafil citrate. So those drugs act as a phosphodiesterase inhibitor, phosphodiesterase 5 inhibitor in the. So some phosphodiesterase enzyme are in a brain. So inhibition of phosphodiesterase enzyme leads to increase in the conversion of cyclic AMP to cyclic 5-cyclic AMP, which results in the stimulation of
nerve cell, stimulation of particular cell, right? Also these drugs, they will bring about the changes in the distribution of calcium at the intracellular sites. तो नर्व सेल में क्या है, कैल्शियम का है ना, कैल्शियम का लेवल चेंज करेंगे, दे विल इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, सो दैट्स व्हाई दे आर स्टिमुलेंट, ठीक है. थर्ड, दे आल्सो ब्लॉक द एडेनोसिन रिसेप्टर. थर्ड मैकेनिज्म, दे आल्सो ब्लॉक द एडेनोसिन रिसेप्टर. तो एडेनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं इन द ब्रेन. तो याद रखना है, फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर प्लस augment the distribution of calcium ions and also block the adenosine receptor. Now pharmacological actions of caffeine. Pharmacological actions of caffeine. Caffeine कहाँ पे होता है? Caffeine is present in the coffee और tea. Coffee में होता है, tea में होता है. Caffeine is present in the coffee. Caffeine कहाँ पे होता है? Coffee में. Tea में भी आपका जो रोजमर्रा का आप चाय पीते हो, चाय में भी कैफीन होता है प्लस थियोपाइलिन होता है. So in the tea you have theophylline and caffeine, but in the coffee you will only caffeine, right? Now what are the actions of caffeine on the cerebral cortex? Pharmacological actions देखो, cerebral cortex है ना. cerebral cortex मतलब क्या है ना. So in small doses like 150 milligram of caffeine stimulate the mental activity and improves the motor activity. Improves the motor मतलब it will increase the muscle activity, motor function, है ना. आप ऐसे बोर हो चुके हो, ऑफिस में बैठे हो, है ना, आप क्या करते हो, यार ना यार चाय पी लेते. चाय पी लिया तो क्या होगा, आप थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ता है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है, अलर्टनेस ऑफ माइंड बढ़ता है. सो कैफीन विल स्टिमुलेट योर ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स विल इंक्रीज द अलर्टनेस, विल इंक्रीज द थिंकिंग कैपेसिटी, विल इंक्रीज द मोटर परफॉर्मेंस, है ना. कोई अगर दिहाड़ी मजदूर है तो दोपहर में थक गया तो क्या करता है, वो चाय पीता है. क्यों चाय पीता है? बिकॉज कैफीन विल इंक्रीज द फिजिकल परफॉर्मेंस इन अ लार्ज डोसेज. इफ यू टेक कैफीन इन 300 to 500 मिलीग्राम ना, 150 मिलीग्राम में इट विल एक्ट एज इन स्टिमुलेंट. बट इफ यू इंक्रीज द डोज 300 to 500 मिलीग्राम, इट कैन कॉज मोर स्टिमुलेशन एंड इट कैन कॉज इरिटेबिलिटी. इरिटेशन करता है, नर्वसनेस करता है, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन इन द थॉट्स. इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब क्या है? लैक ऑफ स्लीप. इंसोम्निया मतलब क्या? लैक ऑफ स्लीप. अगर आपको नींद नहीं आ रही भाई, है ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसको इंसोम्निया बोलते हैं, है ना. नींद ना आने के बहुत रीजन होते हैं, देखो, है ना. आपके जो एज ग्रुप है उसमें नींद ना आने का रीजन अलग होता है ना. आपके एज ग्रुप में नींद ना आने का रीजन अलग होता है ना. आपके एज ग्रुप में नींद ना आने का रीजन एक कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, ठीक है. अभी वो कौन है, क्या है, वो अपना अपना देख लो, बट वो एक रीजन होता है, वन ऑफ द रीजन फॉर है ना इंसोम्निया, ठीक है. इन सम एज ग्रुप देयर इज अ लैक ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ द ओवर थॉटिंग और ओवर थिंकिंग और ड्यू टू द लाइफस्टाइल. इन सम एज देयर इज अ लैक ऑफ स्लीप ड्यू टू द पेन, है ना. पेन हो रहा है तो स्लीप कैसे आएगी? So in the higher dose it can cause nervousness, irritability, confusion, insomnia, headache and tremors. Tremors मतलब क्या? Unnecessary contraction of your muscles. Then what is the action on medulla? So it is stimulate the respiratory center in the medulla oblongata. So caffeine will stimulate the respiratory center in the medulla oblongata, vasomotor center, vasomotor center and vagal center in a larger dose. What is the action of caffeine on a spinal cord? Spinal cord के ऊपर क्या action है? Increases the reflex excitability of spinal cord in a large doses and it can cause convulsions in the animal. Convulsions मतलब क्या? Epilepsy. It can cause convulsions in the animal. Now what is the action of caffeine on heart? हार्ट के ऊपर क्या एक्शन है? आपने चाय पिया है तो क्या होता है, थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो पार्शियल स्टिमुलेशन ऑन मायोकार्डियम व्हिच इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज अ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, है ना. क्रोनोट्रोपिक एक्शन मतलब रिलेटेड टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम क्रोनोट्रोपिक. आइनोट्रोपिक मतलब रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ हार्ट रेट अगर आता है तो उसको आइनोट्रोपिक बोलते हैं.
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्रोनोटॉपिक बोलते हैं, ठीक है। देन लूसिटॉपिक मतलब रिलैक्सेशन फ्रिक्शन ऑफ हार्ट। व्हेन विल सी द ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, व्हेन विल सी द ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। Okay, by stimulating the heart and myocardium, by stimulating the heart and myocardium, it will increase the blood pressure, but because of its vasodilatory effect, caffeine will cause vasodilation, ये blood vessel को dilate करता है। by vasodilatory action it will decrease the blood pressure, and by stimulating the heart it will increase the blood pressure, so it has a biphasic response, and the response on the blood pressure is very transient, कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है। then larger dose of caffeine will cause palpitation, आपको पसीना आ जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाओगे आप, tachycardia, occasionally it can cause cardiac arrhythmia, है ना। now what are the actions on blood vessel, देखो it causes the peripheral vasodilation, peripheral blood vessel आपका dilate हो जाएगा, because of which it increases the cardiac preload, cardiac preload बढ़ाता है, मतलब the blood returning to the heart is increased, dilation of coronary blood vessel is there, constriction of cerebral blood vessel, आपको देखो constriction of cerebral blood vessel, तो peripheral blood vessel जो है आपके बॉडी के वो डायलेट करता है, it will dilate the peripheral blood vessel but will cause constriction, है ना, constriction of cerebral blood vessel, constriction of cerebral blood vessel मतलब आपके cerebrum के ब्लड वेसल को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट्स है ना पेन और हेडेक रिलीफ एक्टिविटी। तो आप होता है ना, आपका सर दुख रहा है तो आप क्या करते हो, इफ आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हो ना, फटक से एक चाय लेते हो ना, तो इट विल कंस्ट्रिक्ट द सेरेब्रल ब्लड वेसल दैट रिजल्ट इन रिलीफ ऑफ हेडेक, relief of headache, also responsible for the relief of migraine headache. So that's why caffeine is combined with the paracetamol. Caffeine is combined with the paracetamol to decrease the headache, है ना। तो dilation अगर होता है cerebrum में, if cerebral blood vessels are dilated, that can cause headache and tension. Okay, that can cause headache and increase the intraocular tension, right? So to decrease that headache, so the drug which constrict the cerebral blood vessel is responsible. So even your sumatriptan, जो drug of choice है migraine में, so in a migraine sumatriptan is the drug of choice. When we will see that drug used in the migraine, at that time also we'll see, so that also causes the cerebral vasoconstriction, and also it has a dilation effect on the pulmonary blood vessel. आपका जो pulmonary blood vessels है, lungs के blood vessels है, that will be dilated, right? Remember, now what is the effect on blood pressure? So the effect on a blood pressure, caffeine effect on a blood pressure, effect of caffeine on blood pressure is unpredictable. Initially it will increase the blood pressure, है ना, which is counteracted by central vagal stimulation, है ना, central vagal मतलब acetylcholine को stimulate करता है. So at one side it will stimulate your heart, it will dilate the blood vessel, and it will also stimulate the cholinergic system to decrease the blood pressure. So unpredictable effect, right? What is the effect on kidney? ना, what is the effect on kidney? So you know that आपको चाय पिया आपने तो क्या होता है, आपको क्या होता है, वॉशरूम के लिए जाते हो ना आप चाय पीने के बाद, क्यों जाते हो? बिकॉज कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, दे हैव अ डाययूरेटिक इफेक्ट ऑन द किडनी, डाययूरेटिक इफेक्ट ऑन द किडनी. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. नाउ स्मूथ मसल्स, तो जो स्मूथ मसल है, जीआईटी के स्मूथ मसल है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, so it will cause relaxation of bronchial smooth muscle and other smooth muscle. आपकी जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देगा. It will cause relaxation of smooth muscle, right? So that's why it is increases the respiration. It increases the respiration of your याद रखना है. What is the effect on a voluntary muscle, skeletal muscle? ना, skeletal muscle के ऊपर क्या इफेक्ट है कैफीन का? So it will cause stretching, it will cause strengthening, it will cause strengthening and contraction of, है ना, it will cause strengthening of contraction. आपको जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा. So it will cause
forceful contraction. So it will increase your motor function, increases the metabolism by central as well as peripheral action. So it increases the muscle metabolism by central as well as peripheral action. So these are the different actions of caffeine on the your body system. मतलब कैफीन का एक्शन क्या है? कैफीन क्या करता है? आप सदियों से चाय पीते आ रहे हो, बचपन से चाय पीते आ रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या क्या है मालूम नहीं. एंड रिमेंबर कैफीन इज एडिक्ट, कैफीन विल फॉर्म एडिक्शन, है ना. बहुत सारे लोगों को चाय लेना पड़ता है, तो इट हैज अ एडिक्शन लायबिलिटी. कैफीन कॉजेज द एडिक्शन. सो मोस्ट कॉमन एडिक्शन इज द इज ऑफ कैफीन. बहुत सारे लोग को चाय लगता है. रिमेंबर. नेक्स्ट, absorption, distribution, metabolism and elimination. Caffeine is rapidly absorbed from GIT upon oral or rectal or parenteral route. Now after absorption it will bind to a plasma protein. So 17% of caffeine will bind to a plasma protein. 17% caffeine क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है. 20% of your theophylline will bind to plasma protein and 3% of theobromine will bind to plasma protein respectively. Now these three are metabolized in the liver. Liver में इनका metabolism होता है, इसका alteration होता है. So they are metabolized by the demethylation and oxidation reaction. liver में क्या होता है? demethylation होता है, उसका oxidation होगा. adverse drug reaction क्या है इसके? adverse drug reaction. Adverse drug reaction. Okay, obviously due to the stimulation की वजह से क्या करता है? Excessive stimulation result in the confusion, tremors, insomnia, excitement due to prolonged stimulation, ringing in the ears. आपके कानों में गाना बज जाएगा. ringing in the ears, headache and tachypnea, मतलब increased breathing. तो CNS के ऊपर ये adverse effect है. confusion, tremors, insomnia, excitement, prolonged stimulation will result in the ringing in the ears and headache, tachypnea. GIT के ऊपर क्या है? gastrointestinal tract के ऊपर. So it can cause hyperacidity. देखो जिसको चाय पीने की आदत है उसका एसिडिटी होता है. It will stimulate the acid formation. Hyperacidity, nausea, vomiting, epigastric pain. That is the most common with the theophylline. Then it can cause tolerance. It can cause tolerance and habituation. It can cause tolerance and habituation. These are the adverse effects. Now what are the therapeutic uses of caffeine? Caffeine के use क्या है भाई? है ना, सिर्फ चाय पीना ही use नहीं है. So it acts as a CNS stimulant. It is used in case of migraine, headache, along with the other drugs like ergot, alkaloids or other drugs. Also used in the acute left ventricular failure. So aminophylline is a drug of choice. Then bronchial asthma, and it is a diuretic. This is theophylline. Theophylline is used in the bronchial asthma. Okay, theophylline is a diuretic also. Caffeine is a diuretic also. Aminophylline is used in the acute left ventricular failure. Okay, so these are the different uses of CNS stimulants. है ना. Then other drugs like amphetamine है, CNS stimulant है, methyl amphetamine. So these drugs will be discussed when we will see sympathomimetic chapter. जब अपन sympathomimetic drug देखेंगे उसमें एम्फेटामाइन, मिथाइल एम्फेटामाइन आएगा. है ना, piperidrol, methylphenidate, they will be discussed in the another chapter known as psychomotor stimulant. ठीक है. Next देखो, next is nothing but the brainstem and medullary center stimulant. Brainstem and medullary center stimulant. ब्रेनस्टेम को, मेडुलरी सेंटर को स्टिमुलेट कौन करता है? तो एग्जांपल इज नथिंग बट द पिक्रोटोक्सिन, है ना, पिक्रोटोक्सिन, पेंटिलिन, टेट्राजोल, निकेटामाइड, कैम्फर. दे आर नो मोर यूज्ड थेरेप्यूटिकली. दे आर यूज्ड टू इंड्यूस द कन्वर्जेंस इन द माइस इन एक्सपेरिमेंटल पर्पस. जैसे मैंने बोला है आपको, दे आर यूज्ड टू इंड्यूस द convergence in the experimental animals. They are used to induce the convergence in the experimental animals. Next we will see
Then doxapram, very very important drug, doxapram. Okay, doxapram is a non-specific analeptic used as a respiratory stimulant. Doxapram is used as a respiratory stimulant in the post-study period and patient with the hypoventilation. पेशेंट विद द हाइपोवेंटिलेशन, अगर ना किसी का वेंटिलेशन कम है तो उसमें डॉक्साप्राम यूज करें. डॉक्साप्राम इज अ नॉन स्पेसिफिक सीन स्टिमुलेंट एनालिप्टिक यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इज यूज्ड टू ट्रीट द ओपियोइड इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. मतलब क्या कि ओपीएम, जो ओपीएम वगैरह है, मॉर्फिन, कोडिन, तो ओपोइडल ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर है तो डॉक्साप्राम यूज करते हैं टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन. इट इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, याद रखना है आपको. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डॉक्साप्राम, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट रेट, मसल ट्विचिंग, ट्रीमर्स, कन्वल्जन्स एंड वोमिटिंग. देन नेक्स्ट जगह आता है मिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. मिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, it also has a respiratory stimulant action used in the patient with a chronic ventilatory failure due to pathological obesity. तो देखो मिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसिटेट ये क्या है, स्टेरॉइडल ड्रग है which also has a respiratory stimulant action used in the treatment of chronic ventilatory failure in due to pathological obesity. उसका नाम है, ये डिसीज का नाम होता है पिकविंकन सिंड्रोम. पिकविंकन सिंड्रोम, पिकविंकन है ना, पिकविंकियन सिंड्रोम. थेरापेटिक यूज ऑफ एनालिप्टिक, तो सीन स्टिमुलेंट ड्रग के यूज क्या है? सो दे आर यूज्ड एज अ पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. दे आर यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. किसी का ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है, उसके बाद में रेस्पिरेशन कम हो गया, सो डॉक्साप्राम यूज करते हैं. डॉक्साप्राम वेंटिलेटरी फेल्योर है ना, मतलब उसका वेंटिलेशन नहीं हो रहा है. Ventilatory failure in the patient with chronic obstructive pulmonary disease, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Now, ventilatory failure in the COPD patient, and they are also used in the primary apnea in a newborn. बच्चों में अगर सांस नहीं ले रहा है तो उसमें यूज करते हैं primary apnea in the newborn. And caffeine, theophylline, theobromine. So you know that they are the respiratory stimulant used in the asthma. Next, stimulant to the spinal cord. Stimulant to the spinal cord, drug which are a stimulant to the spinal cord. Example है उसका strychnine. Strychnine is a alkaloid. It is a alkaloid obtained from a strychnine is a alkaloid from nux omega. Strychnine is alkaloid from nux omega. It can produce a convulsions, can produce a seizures characterized by extension of body. आपका हाथ पैर आप क्या करोगे, फैला दोगे. It is a competitive inhibitor of glycine. Glycine क्या है? Inhibitory amino acid. Glycine is inhibitory amino acid. So inhibitory and neurotransmitter amino acid. So it causes the stimulation. It is not used therapeutically. स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग. अगर स्ट्रिचनिन का पॉइजनिंग हो गया तो इन दैट केस इंट्रावेनस डाइज़ेपाम इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट. देन आल्सो पोटेशियम परमैंगनेट एंड यूनिवर्सल एंटीडोट, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग. ये ड्रग कोई थेरेपेटिकली यूज नहीं करते, बस पॉइजनिंग के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, एग्जाम्पल इज लोबेलिन. क्या है लोबेलिन? लोबेलिन क्या है? इज अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम लोबिएला. लोबेलिन इज अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम लोबिएला. So it stimulates CNS through a chemoreceptor of carotid sinus, and also reflex stimulant to the CNS. It will stimulate also autonomic ganglia, axon, which induces the sweating. It is rarely used the CNS stimulant. तो CNS stimulant में आपको ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, कैफीन के एक्शंस पूछेंगे, मैकेनिज्म पूछेगा या फिर क्लासिफिकेशन पूछेगा. देन
हेलोसिनोजेन मीन्स व्हाट? हेलोसिनोजेंस, दीज आर द ड्रग व्हिच आर हैविंग एक्सट्रीम स्टिमुलेशन, ये क्या करेंगे आपको बहुत ज्यादा सीनेस को स्टिमुलेट करेंगे. Hallucinogens, they will stimulate your sinus in such a extent that you will get hallucinations. Hallucinogens मतलब क्या? These are the drug which will stimulate your sinus and will cause hallucinations. Hallucination मतलब क्या? आपको आभास हो जाएगा, आपको है ना, आपको कोई बुला नहीं रहा फिर भी आपको लगा मेरे को बुला रहा है, कोई आपको मार नहीं रहा है आपको लगा कोई मार रहा है. Hallucinations. तो hallucinogens और hallucinations, hallucinogens, drug which produces the hallucinations known as hallucinogens, और psychotomimetics और psychedelics और psychodysliptics. मतलब क्या? they will produce a psychosis, they will produce a psychosis, आपको पागल बना देंगे hallucinogen, है ना. फॉर एग्जांपल आपका आता है, देखो क्लासेस, इंडोल अल्कलामाइन डेरिवेटिव, इंडोल अल्कलामाइन डेरिवेटिव, उसमें पहला आता है लैसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, लैसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड. तो इसको एलएसडी बोलते हैं, इट इज अ ड्रग ऑफ एब्यूज. एलएसडी क्या है? ड्रग ऑफ एब्यूज. बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना एलएसडी यूज करते हैं. सो इट इज नोन एज, है ना, ड्रग ऑफ एब्यूज, ड्रग ऑफ एब्यूज. लैसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, एलएसडी. देन लैसर्जिक एसिड अमाइड, देन psilocybin, then harmine is alkaloid, psilocybin is alkaloid, then dimethyltryptamine is also alkaloid. All these are used as a hallucinogen. They will produce hallucinations and psychosis. ठीक है. दूसरा है एग्जांपल फिनाइल अल्कलामाइन डेरिवेटिव, इसमें मस्केलिन इज अल्कलोइड, इक्टेसी इज अ, इक्टेसी क्या है? इट इज अ, है ना, ड्रग्स का नाम है, मतलब जो ड्रग्स है ना, जैसे आमिर खान, सॉरी अपना ये कौन, शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था उसमें. इक्टेसी मतलब क्या? इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ सम ड्रग. व्हाट इज इक्टेसी? मिथिलीन डाइऑक्सी मिथाइल एम्फेटामाइन. इक्टेसी इज अ ब्रांड नेम ऑफ मिथिलीन डाइऑक्सी, है ना, मिथिलीन डाइऑक्सी मिथा एम्फेटामाइन. तो एम्फेटामाइन क्या है? इट इज आल्सो ड्रग ऑफ एब्यूज, ड्रग ऑफ एब्यूज है. तो ड्रग जो करते हैं उसमें ये आता है ना. देन याबा, याबा भी क्या है? इट इज अ ट्रेड नेम फॉर ड्रग ऑफ एब्यूज. तो इसमें होता है मिथाइल एम्फेटामाइन प्लस मिथॉक्सी, मिथाइल एम्फेटामाइन प्लस मिथाइल हेक्सामाइन डेरिवेटिव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन. देन अराइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, उसमें फेनसाइक्लिडीन होता है. एंड कैनाबिनॉइड्स, है ना, चर्सी, है ना, चर्सी मालूम है ना आपको? चर्सी, है, जय भोलेनाथ चिलिम फूको, जय भोलेनाथ बोल के एक चिलिम फूक लेते, है ना. कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स मतलब क्या? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कैनाबिन, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल मतलब गांजा, गांजा जो होता है गांजा. So all they can induce the hallucinations, they can stimulate your sinus and they will induce your hallucination, they can produce your psychosis, ये आपको पागल बना देंगे, है ना. psychosis, they will produce a psychosis, that's why they are known as a psychotomimetics और psychedelics और psychodysliptics. क्यों बोलते हैं इनको psychodysliptic, psychotomimetics, psychedelics? Because they will produce hallucinations and they will induce the psychic episodes, psychic बना देंगे आपको, that's why. तो ये क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, है ना. tomorrow we'll see the drug used in the schizophrenia and mania, drug used in the schizophrenia and mania. tomorrow we'll see. So I will end this session now. कल अपन देखेंगे ड्रग यूज इन द schizophrenia, mania and psychosis, है ना. साइकोसिस क्या होता है? टाइप्स ऑफ साइकोटिक इलनेस, है ना. साइकोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस क्या होता है ना. किसमें फिजिकल चेंजेस आता है, किसमें साइकियाट्रिक बिहेवियर आता है. तो टुमारो विल सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम GPAT Niper DI पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये जो सीन स्टिमुलेंट है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको सीन स्टिमुलेंट में से, बट जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है दे आर मोर इम्पोर्टेंट. सो टुमारो विल सी दैट, है ना. एक्चुअली आज ही लेना था मुझे, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है, लाइट कभी भी जा सकती है. लाइट आ गई बाय चांस तो मैंने ये ले लिया 45 मिनट का सेशन, राइट. सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड सीन स्टिमुलेंट. और उसमें और एक ड्रग आता है इसमें, है ना,
उसको बोलते हैं piracetam. There is a one drug which comes under the sine stimulant known as a piracetam. So piracetam, we'll see tomorrow in a short about the piracetam, and then we'll start the antipsychotic drugs, right? So I hope everybody has understood today's session. समझ में आया आपको आज का? So sine stimulant, yes. So tomorrow we'll see the antipsychotic drugs. एंटीसाइकोटिक ड्रग देखेंगे कल, उनका है ना सब कुछ देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, मैनिया. सब कल देखेंगे, फिर मैकेनिज्म वगैरह क्लासिफिकेशन वगैरह सब अपन कर देंगे. तो आई विल एंड दिस सेशन टुडे.